As I have been teaching about the Maxwell equations, today I shall explain the second equation. I told you earlier that all Maxwell equations are the integral or differential forms of some basic laws of electromagnetism. The first equation is the differential or integral form of Gauss's laws in electrostatics. The Maxwell's second equation is related to Gauss's law in magnetostatics. Dear students, we know that magnetic field lines are closed curves. Magnetic field lines are closed curves. It means across any closed surface placed in a magnetic field, the net magnetic flux through it is always zero. That means magnetic field's flux across a closed surface is always zero. Using divergence theorem. Now this is simple. It is very simple to learn that it is the integral form of Maxwell's second equation. Now using divergence theorem for any vector field A, what is the divergence theorem? A dot ds is divergence of a volume integral. Here the volume is the same which is enclosed by this particular closed surface. So if I using this, we get divergence of a vector dv is equal to 0. That means divergence of A is equal to 0. This is the Maxwell's second equation in general. You can use a divergence of B will be 0 when I will use this equation here. It means magnetic field B is a solenoidal vector. As I told, whenever you are asked in examination that prove the following vector is a solenoidal vector, then its divergence must vanish. So it's solenoidal vector, or I can say del bx upon del x, del by upon del y, del bz upon del z is equal to 0. I hope you can understand it very well. Now I come to so what is the physics behind this? What is the physical significance of this second equation? That monopole does not exist in magnetics.
The smallest structure in magnetism is the dipole. प्रिय विद्यार्थियों, मैक्सवेल की द्वितीय समीकरण चुंबकीय में गॉस के नियम पर आधारित है। हम जानते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र का निर्माण करती है, अर्थात उनका न कोई स्रोत होता है न ही कोई सिंक, नाइदर ए सोर्स नॉर ए सिंक। तो जब भी चुंबकीय क्षेत्र में कोई बंद पृष्ठ रखा जाएगा तो उससे निकलने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स हमेशा शून्य होगा। इसलिए किसी भी चुंबकीय क्षेत्र B में उस क्षेत्र का किसी बंद पृष्ठ पर क्षेत्रफल समाकलन हमेशा शून्य होगा, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स की जो परिभाषा है वो आप सब जानते हैं, इंटीग्रेशन B डॉट ds इज इक्वल टू 0। गॉस के डाइवर्जेंस प्रमेय का मैं उपयोग करता हूँ किसी भी सदिश क्षेत्र A के लिए उसका पृष्ठ समाकलन बंद पृष्ठ पर उसी पृष्ठ के द्वारा घेरे गए आयतन पर उसके आयतन डाइवर्जेंस के आयतन समाकलन के तुल्य होता है। ये जैसा मैं बार बार आपको कहता आया हूँ, आपके प्रथम पेपर में सर ने आपको गणितीय भौतिकी में ये पढ़ाया होगा। इसके बाद इन दोनों समीकरणों की आप तुलना करेंगे। केवल आपको एक ही स्थान पे B रखना है, तो डाइवर्जेंस ऑफ B dV बराबर 0 हो जाएगा, और किसी भी नॉन जीरो वॉल्यूम के लिए इसको आप लिख सकते हो डाइवर्जेंस ऑफ B बराबर 0, अर्थात B के डाइवर्जेंस का मान सदैव 0 होता है। इसका भौतिक महत्व जो पूछा जाता है, 1 नंबर का सवाल पूछ सकते हैं, तो आप परीक्षा में लिख के आएंगे कि मैक्सवेल की द्वितीय समीकरण का भौतिक महत्व ये है कि चुंबकीय में एकल ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता। जो न्यूनतम कॉन्सेप्ट है वो डाइपोल की होती है, द्विध्रुव की होती है। और मैथमेटिकली आप इसको एक्सपेंड करके इसके कंपोनेंट फॉर्म में यानी घटक रूप में आप इस तरह से इसको लिख सकते हो। ये द्वितीय समीकरण है प्रिय बच्चों। अब मैं बारी लेता हूँ मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन। प्रिय छात्र छात्राओं, as I have been telling you, Maxwell's third equation is related to one of the most important fundamental laws, Faraday's laws of electromagnetic induction, which I told in the last chapter, if you remember, Faraday's law of electromagnetic induction. One thing I oftenly tells my students that in the electromagnetic induction phenomena, the induced electric field is non-conservative. I would like to mention here that this induced electric, the field lines of this induced electric field are forming closed curves. This is a very interesting thing to learn. Induced electric field is non-conservative. Now, what Faraday's law tells me is, since induced EMF E is the time rate of change of magnetic flux through any closed path, closed circuit. Remember, there is a little